has proved himself by listening to my feedback very carefully, understanding it, and implementing it. First time when he made a video on secondaries, he talked something about avoidance also, because he was treating both of them in the same light. And when I gave him the feedback that let us think about secondaries and avoidance separately, then he made second video 2.2b, where he talks about avoidance and only avoidance, and he does it pretty well. He does a deep analysis. So today I think we can talk about this avoidance and secondaries. I think first of all it will be good, it will be very helpful if you as a professor can tell us about the difference between secondary behaviors and avoidances, a rough kind of um, explanation. And then we can go to avoidances and how they impact our life, our creativity, everything. Over to you, Dr. Amit. श्योर। तो मैं हिंदी इंग्लिश मिली जुली बोलूँगा। तो यहाँ पे लिटरेचर में जो है, रिसर्च में है, ये जो बताया गया है वो ये है कि सेकेंडरी बिहेवियर जो होता है उसको एक्सेसरी बिहेवियर भी बुलाते हैं और स्ट्रगल बिहेवियर भी बुलाते हैं। वो उस टाइप का बिहेवियर है जिस जो जो कि पुशिंग से पुशिंग से एसोसिएट होता है, कि जोर लगाने से एसोसिएट होता है। क्योंकि हर एक मोटर मूवमेंट में, चाहे हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब मैकेनिकल मूवमेंट है। इस मैकेनिकल मूवमेंट में एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम होता है कि हमको जब तक हमें चाहते हैं, हम मैकेनिकल मूवमेंट जारी रखना चाहते हैं, जब रोकना चाहते हैं वो रोकना चाहते हैं, तो उसमें रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम, इंटरनल रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम होता है। तो पर्पस क्या होता है एफर्ट का, वो ये है कि वो कॉन्टिन्यूटी रिस्टोर करती है, आगे बढ़ते हैं हम उससे। तो नॉर्मली स्टैमरिंग की का जो बिहेवियर है उसको प्राइमरी बिहेवियर बुला सकते हैं, सेकेंडरी बिहेवियर बुला सकते हैं। प्राइमरी बिहेवियर तो होता है कि जो बेसिक जो ग्लिच है, इंटरप्शन है, आगे आगे बढ़ने में जो रुकावट है, वो कभी कभी ऐसे रेपिटेशन में निकलती है, कभी 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 ये प्रोलॉन्गेशन निकलती है, कभी ब्लॉक में निकलती है। तो लेकिन जब हम और जोर लगाते हैं उसको निकालने के लिए, संघर्ष करते हैं, ज्यादा संघर्ष करते हैं, तो ये जो एडेड लेवल ऑफ टेंशन होती है, फिजिकल टेंशन जो होती है, उसको सेकेंडरी बिहेवियर मानते हैं। लेकिन और अगर डिस्टिंक्शन में देखा जाए, और अगर कोई अवॉइडेंस बिहेवियर और सेकेंडरी बिहेवियर में क्या अंतर, क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है, उस लिहाज से देखा जाए तो अवॉइडेंस बिहेवियर हम वो बिहेवियर करते हैं कि हम ना हकलाएं। उसका रेंज बहुत वास्ट है। हम शब्द चेंज करते हैं, साउंड चेंज करते हैं, किसी से बात करनी है उससे आंखें उससे बात नहीं करते, या फिर आंखें झपकाते हैं, जो भी है, हम अवॉइड करते हैं कि हम ना हकलाएं। तो ये डिस्टिंक्शन है अवॉइडेंस बिहेवियर में और सेकेंडरी बिहेवियर में। लेकिन ओवरलैप भी बहुत है, कॉमन चीज भी बहुत है। मैं अगर कोई कोई शब्द बोलने जा रहा हूं, लाइक मैं जानता हूं शब्द के ऊपर हकलाऊंगा, तो हकलाने से बचने के लिए मैं आ, 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 प- 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 ये सब कुछ जो मैं बिहेवियर दिखा रहा हूं आपको, पोस्टपोन, ये ये मेरा स्टैमरिंग के पैटर्न में अवॉइडेंस का पैटर्न है। आई एम ट्राइंग टू अवॉइड रिलीज। क्या हो रहा है कि हकलाहट में ये अवॉइड रिलीज जो सिस्टम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है समझना। क्योंकि हम जब कि, 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 जब मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं तो मैं अवॉइड कर रहा हूं कि मैं ना हकलाऊं। So, in the research, it has been said that stammering is something we do when we are trying not to stammer. What does that mean?
वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द स्टैमर, इट्स कमिंग, जानते हैं हम आ रही है, हम आने वाली है, हकलाहट आने वाली है, इस शब्द के ऊपर हकलाहट आने वाली है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो हम करते संघर्ष करते हैं, ये भी सेकेंडरी बिहेवियर है, उसका मैनिफेस्टेशन सेकेंडरी बिहेवियर है। और जब हम स्टैमर के बीच में होते हैं, व्हेन यू आर इन द मोमेंट ऑफ द स्टैमर, तो क्या होता है, हम उसको पुश करके निकालते हैं। ये अवॉइड रिलीज साइकिल जो है, दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ द स्टैमरिंग, द बिहेवियर पैटर्न। आई कॉल इट अ कंपोजिट। मतलब कि जैसे कि लकड़ी में अगर आप देखें, लकड़ी में काफी ग्रेन होती हैं, एक इस टाइप की ग्रेन है, इस टाइप की ग्रेन है, इस टाइप की ग्रेन है, एक भूरी वाली ग्रेन है, एक हल्की वाली ग्रेन है। जैसे कि लकड़ी में ग्रेन्स होती हैं, एक कंपोजिट मटेरियल होता है, स्टैमरिंग में भी एक कंपोजिट बिहेवियर होता है। उसका पार्ट होता है अवॉइड का करना, और जब अवॉइड नहीं हो सकता तो उसको पुश करके रिलीज करना। तो हम डेफिनेटली अवॉइडेंस और सेकेंडरी बिहेवियर को दूसरी आई मीन एक दूसरे से अलग कैसे हैं वो देख सकते हैं, लेकिन ओवरलैप देखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इन द सेकेंडरी बिहेवियर देर इज एन अवॉइडेंस कंपोनेंट, इज द पॉइंट। So, and of course, secondary behavior is the physical part. Avoidance is massive. These are all life choices. किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, किसी से शब्द चेंज करना है, वो all that is different from secondary behavior. लेकिन मोटर पैटर्न में, कंपोजिट मोटर पैटर्न में जो है secondary behavior, avoidance behavior एक जैसा भी हो सकता है, if that makes sense. I've got a question. Shall I jump in now or shall I wait? No, jump right in. Sure. So, my one question for my own understanding is: Hmm. is it safe to say that that avoidance behaviors are more like a fleeing response to danger, fleeing, fight Yeah, and flee? So it's more yeah, like flee, and secondary yeah, behavior is more like fight response. that's right. Okay, and of That course you makes have said sense that. because, yeah, that makes a Yeah. lot of sense Okay. because the Okay. flight is the avoidance, the fight Yeah. is the pushing. Pushing, But right. oftentimes when we know we're getting Uh, into a moment of stammering, we do yeah. both. We Right. flee first, we try to Yes. flee, Yes. but then when in it, we fight. Yes. It's So like that's why I'm saying कि uh, avoidance, this understanding avoid release जो system yes. है, avoid release, avoid release, avoid release, ये system जो है, another way to put it, as you said, is Mm, flight fight, flight fight, flight fight. It's the same thing. It's similar concept. mm, Um, so basically, what I'm trying to say is they are very similar as far as the motor behavior is concerned, the right. physical stammer is concerned, but they can also be very different as far as the choices that we make, the conscious choices that we make. Right. Right. Because avoidance relates to many more things in Mm, life, mm, mm. and secondary behavior is really just part of the moment of stammering itself. Yeah. Yeah. I've got one more thought. When Shihan talks about approach avoidance conflict, is he also talking about more or less same thing? One moment we are ready to fight, next moment we are frightened and we want to flee. We are approaching and also we are avoiding. Is it same thing? I mean, does it map well It maps on this quite idea? well. It maps quite well onto what we're talking about. He talked about stammering being an approach avoidance conflict as being the Mm, tension between two oppositional forces. right. दो फोर्सेस हैं जो जो Mm, जो बॉडी में, जो कि बहुत अलग अलग हैं। एक right. एक अप्रोच बिहेवियर है कि हम बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कहने में, कुछ बोलने में हम स्टैमरिंग महसूस करते हैं, तो उसके नेगेटिव रिएक्शन होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इज कि हम एक लिहाज से अप्रोच कर रहे हैं, एक लिहाज से अवॉइड कर रहे हैं, और ये अप्रोच अवॉइडेंस का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये मोटर पैटर्न में भी दिखा जाता है। Right. सो या इट मैप्स क्वाइट वेल। Yeah. And one last question. I want to take good advantage of this office hours of the professor.
One last Go question. ahead, go ahead. Uh, when I stammer, I also feel embarrassed. So embarrassment is a problem of emotions. So can we say that secondary behaviors can be both physical and as well as emotional? Or suppose I forget the next word. Uh, is it safe to say that secondary behaviors can include both motor, cognitive, and affect? Typically, when we talk about secondary behavior, struggle behavior, we are talking only about the physical part. Okay. Right. It's much easier to incorporate avoidance into secondary behavior than to incorporate secondary into avoidance behavior, if that makes sense. Because the set of avoidance behaviors is very, very wide, right? I mean, the avoidance has a lot to do with speech, everything to do with speech, but it may not have anything to do with the motor pattern in one instance. If I just completely don't, like if I'm going to a party tomorrow and if I no, keep avoiding talking to somebody. I know I'm scared of this person. This person is going to ask me a question. I don't want to talk to this person. तो ये जो fear based response है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, ये मोटर पैटर्न का रिस्पॉन्स नहीं है, ये हमारा फियर है, एम्बैरेसमेंट है, शेम है, जो भी बुला लीजिए उसको। वो अ, और क्या होगा कि अगर मैं किसी से बात करना चाहता, अवॉइडेंस बहुत करता हूं मैं, तो क्या होगा जी, ये जो कंसीलमेंट है, छुपाना जो है, ये दिस इज गोइंग टू रैम्प अप द थ्रेट रिस्पॉन्स इन द बॉडी, right? This is all about threat response. Fight, flight, freeze are responses to threat. यहाँ पे, this is a threat. This is a social threat. We feel socially threatened when we are going to stammer in a particular place. So these are typically responses to threat. अब threat में response में क्या होगा? अगर आप जंगल में जा रहे हैं, वहां पे कोई साउंड आती है, आप फ्रीज हो जाते हैं या भाग जाते हैं, या जो भी ये रिस्पॉन्सेज हैं अपने आप की, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका पार्ट क्या होगा कि आपकी मसल टेंशन जो है वो ज्यादा होगी. इट विल एलिवेट मसल टेंशन. Neurologically, we call it a sympathetic nervous system arousal. Our threat response is active. And the typical response to a threatening situation is we ramp up muscle tension. और मसल टेंशन की जब इंक्रीज होगी, जब आपकी हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें टेंशन ज्यादा होगी, तो वो टेंशन हम अपनी स्पीच में लाएंगे, तो ये सारा सिस्टम जो है ये अपसेट हो जाएगा. क्योंकि स्पीच प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो बहुत ही प्रिसाइज सिंक्रोनाइज मूवमेंट की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की जरूरत होती है, लेकिन एफर्ट की जरूरत नहीं होती. आज when we add effort into the mix, that throws the entire system off. तो स्पीच थेरेपी में भी जब हम फिजिकली स्पीच के ऊपर काम करते हैं, तो वी ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रगल, कि फॉरवर्ड मूवमेंट जो है, कॉन्टिन्यूटी वे वो बरकरार रहे, आगे बढ़ सके हम, लेकिन हम ज्यादा स्ट्रगल ना करें. तो जब हम बाउंसिंग करते हैं, तो बाउंसिंग का पॉइंट क्या है? बाउंसिंग का पॉइंट यही है कि हम कॉन्टिन्यूटी में थोड़ी सी डिसरप्शन टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल नहीं है, फिजिकल स्ट्रगल नहीं है. जब हम प्रोलॉन्गेशन ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें भी कॉन्टिन्यूटी थोड़ी सी डिसरप्टेड है, लेकिन आगे बढ़ रही है स्पीच, लेकिन हम फिजिकली स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं. तो अ लॉट ऑफ स्पीच थेरेपी इज अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रगल. क्योंकि स्टैमिना का कोई क्योर नहीं है, लेकिन स्टैमिना की मैनेजमेंट बहुत पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है. इसलिए हम कभी बाउंसिंग में चले जाएंगे, कभी ब्लॉक में ले जाएंगे, लेकिन अगर हमको पुल आउट आता है कि मिड स्टार्टर के आगे के बीच में अगर हम थोड़ा सा आराम से रोल ऑन करके निकल जाएं, तो ये भी टेस्ट कर सकते हैं, ये भी कंटिन्यूटी रिस्टोर कर रही है कम स्ट्रगल से. तो अ लॉट ऑफ इट इज अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रगल.
और इमोशनल स्ट्रगल ऑल्सो। जब हम किसी को बताते हैं कि हम हकलाते हैं, खुल के हकलाते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं करते कि क्या सोच रहा है, जब हम वॉलंटरीली स्टैमर करते हैं, तो ये भी, these are also ways of reducing emotional struggle. So while we are people who stammer, I'm a person who stammers, you're a person who stammers, everybody here is a person who stammers. लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है स्टैमरिंग का काफी चेंज हो सकता है। उसमें बहुत एम्पावरमेंट आ सकती है, उसमें बहुत कंट्रोल आ सकता है, उसमें एडवोकेसी आ सकती है, उसमें मैनेजमेंट आ सकती है। ये सब कुछ हो सकता है। और यहाँ हम जो सीख रहे हैं टीओपीजी में, वो यही है कि हाउ डू वी रिड्यूस स्ट्रगल। Yes, very correct. So what we can do now, we can take one or two questions, and then we can send people in breakout rooms and ask them to discuss their avoidance and secondary behaviors for some time, and then they can come back and then they can ask some questions, and we can also ask them questions. Sure. Is that a good idea? Sure. Okay, Yeah. okay. So before I send them off to breakout room, it'll be good if we can just get one quick feedback from one participant, whether they have followed it or not, because at one time it was more like a professor and a doctor. So Dheeraj, have you understood so far what Dr. Amit Bajaj has explained? Yes, sir. I have understood. The question which I got is like when I got into the blog, then I am thinking about that blog, and I just struggling into that blog that I can still get speak better, but I am not able to apply technique. Like if I stutter, then I want to uh, remain in that stuttering phase, but I am not applying the bouncing or prolongation during that part. Is that avoidance behavior? Like I am avoiding this stuttering in hope that I can still able to fight with my stammering, and with uh, I can still speak fluent. So is that a avoidance behavior or not? We can ask Dr. Amit तो Bajaj. Dr. Amit, धीरज, मैं आपका सवाल थोड़ा ठीक से समझना चाहता हूँ। आ, थोड़ा सा ठीक से बताइए मुझे, एक बार और बताइए। और हिंदी, हाँ। हाँ, तो जैसे हिंदी मैं में पूछ के दिखाइए। हाँ। पिछले तीन हाँ। दिनों से एक चीज कर रहा हूँ फेस, अपने फ्रेंड से जब बोल रहा हूँ तो अटक जाता हूँ मैं बीच में, जैसे कि हम्म। धीरज, बाहर जाना है, तो बाहर, अब जैसे ये ब्लॉक में आ गया, अब मैं यहाँ हाँ। पर आई एम थिंकिंग दैट अभी भी मैं फाइट कर रहा हूँ कि मैं स्टटरिंग को स्टिल बाहर, मैं आगे फ्लुएंसी मेंटेन कर लूं, बट आई एम नोट अप्लाइंग एनी टेक्निक बाहर, या फिर बाहर, या उस टाइम पे वो टेक्निक अप्लाई होती नहीं है, क्योंकि दिमाग में ये समझता है कि दिमाग स्ट्रगल करना चाहता है कि अभी भी आप फ्लुएंट बोल सकते हो। तो क्या ये हम अवॉइड कर रहे हैं इसे अभी भी? नहीं, ये अवॉइडेंस बिहेवियर की कैटेगरी में मुझको, जैसे आप समझा रहे हैं हमको, ये अवॉइडेंस बिहेवियर की कैटेगरी में नहीं जा रहा। ये क्या हो रहा है कि आप बोलना चाहते हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली स्टैमरिंग महसूस कर रहे हैं, आगे पढ़ने में प्रॉब्लम है आपको, इसलिए आप पुश कर रहे हैं। अब बीच में कोई अवॉइडेंस अगर आपने कोई अगर डाल दी तो और बात है, लेकिन अगर जब आप पुश कर रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं मेरा नाम धीरज पूर्णिया है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जब इस टाइप से बोल रहे हैं, तो उसमें 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 अवॉइडेंस खास नहीं है। ये हो सकता है कि आपके मोटर पैटर्न में भी थोड़ी अवॉइडेंस हो, लेकिन यू आर जस्ट ट्राइंग टू पुश द वर्ड आउट। लेकिन आप दो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि क्या ये अवॉइडेंस है, और दूसरा ये है कि अगर आप कोई टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए,
क्वाइट ऑफन प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। और प्रैक्टिस क्या है कि आपका जो बिहेवियर है, मेरा जो बिहेवियर है, हम सबका बिहेवियर है यहाँ पे, ये पिछले कई सालों से ये बिहेवियर हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। ये कंडीशन बिहेवियर है, ये लर्न बिहेवियर है। तो इस लर्न बिहेवियर को अनलर्न करने के लिए जो सीखा है हमने, हमारे शरीर ने जो सीखा है, उसको दूसरे टाइप से सीखना टाइम लगेगा। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं जो जानता है कि कैसे इसको इसको मैनेज कर सकते हैं, तो होपफुली वो क्या करेंगे आपके साथ कि आपको छोटे छोटे एक्सरसाइजेस देंगे कि इस सिचुएशन में अगर आप किसी की, आपके कम्युनिकेशन, ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर कौन है, आप सेफ जोन क्या है आपका, किसके साथ आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं हकलाता हूँ, किसके साथ आप बाउंसिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो है उसको प्रैक्टिस जारी रखने के लिए एक्सरसाइजेस देंगे आपको कि आप यहाँ जाइए, किसी ट्रस्टेड पार्टनर के साथ बोलिए, रीडिंग में प्रैक्टिस कीजिए, पाथ में कीजिए, बाउंसिंग कीजिए, प्रोलॉन्गेशन कीजिए। ये सारी चीजें जो है अगर आप लगातार प्रैक्टिस करने लगेंगे, डेली डेली प्रैक्टिस करने लगेंगे दूसरे दूसरे सिचुएशन में, तो अपने आप जो है आपका फियर कम हो जाएगा, फियर कम हो जाएगा। और आप ज्यादा अगर आप ये टेक्निक प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो ये भी जो है रिकंडीशन बिहेवियर हो जाएगा। आपका जो बिहेवियर है, जो गॉड बहुत ही कंडीशन बिहेवियर है, इसको रिकंडीशन हो जाएगा। तो these are two different questions. So that's my answer right now. I don't know if that helps. थैंक यू सर। हाँ हाँ, धीरज धीरज, मैं भी ये बात कहने वाला था कि आप जो बता रहे हैं इट्स मोर लाइक लैक ऑफ प्रैक्टिस। मगर मगर ये भी सच है कि अभी हम लोगों ने ये सब पुल आउट कवर नहीं किया है, कैंसिलेशन कवर नहीं किया है। तो इसलिए अभी ये समस्या आपकी मैं समझ सकता हूँ। तो जब आप पुल आउट करना सीख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप ब्लॉक में जाने के बाद उससे बाहर भी निकल पाएंगे। ये मुमकिन है और ये ज़रूर होगा। मगर उसके लिए आपको काफ़ी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा पुल आउट का या कैंसिलेशन का। तो हम लोग जल्दी ही वो भी शुरू करने वाले हैं। सो डोंट। एक बार और मैं ऐड करना चाहता था आपको कि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली पॉइंट है, कि अगर हम कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं अपनी स्टैमरिंग छुपाने के लिए, तो उसका जो असर होगा वो और होगा। लेकिन अगर हम कोई टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी स्टैमरिंग को दिखाने के लिए, लेकिन स्टैमरिंग को कम टेंस करने के लिए, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही अलग होगा। सो मैं आपको एग्जांपल अगर मैं देता हूं कि अगर मैं अपनी स्पीच में पुल आउट करने लगूं, अगर मैं 60 सेकंड के लिए अगर मैं पुल आउट प्रैक्टिस करूं कि अभी मैं अब जो है अपनी स्पीच में थोड़ी सी टेंशन डाल रहा हूं ताकि मैं पुल आउट प्रैक्टिस करूं। अगर अगर मैं पुल आउट प्रैक्टिस करने के लिए, अगर मैं पुल आउट यूज कर रहा हूं कि मैं स्टैमरिंग ना हो मुझे, तो मेरा जो थ्रेट परसेप्शन है वो भी हाई है। My emotional reactivity in that encounter is very high. So it's very difficult for me then to use a technique when I'm trying to hide the stammer. इसलिए जो लोग स्टैमरिंग को छुपाते हैं, जिनको हम कोवर्ट स्टैमर्स बुलाते हैं, उन लोगों के लिए टेक्निक उनको देना, उनको सिखाना जो है काफी टाइम काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो टेक्निक जो है यूज करते हैं फिर, क्योंकि उनकी बॉडी जो है यूज टू है, कंडीशनड है कि मैं छुपाऊं, तो वो टेक्निक को यूज करेंगे छुपाने के लिए। लेकिन यही सिचुएशन को अगर आप दूसरी लिहाज से देखें कि अगर मैं पुल आउट करूंगा, कल जो है किसी के साथ बात करने के लिए मैं पुल आउट प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ी वॉलंटरी स्टैमरिंग करूंगा ताकि मैं पुल आउट प्रैक्टिस कर सकूं, और मैं अपने पार्टनर को बताऊंगा कि मैं अपनी स्पीच को थोड़ी सी डिफरेंटली यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी वॉलंटरी स्टैमरिंग और पुल आउट प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
तो ये जो है, अब आप छुपाने के लिए नहीं कर रहे, आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप लोगों को आप कंसील नहीं कर रहे, तो आपकी थ्रेट परसेप्शन कम है, एंजाइटी कम है, माइंडफुलनेस ज्यादा है। तो तब उस लिहाज से अगर आप टेक्निक जो है वो ज्यादा अच्छी तरह जो है प्रैक्टिस कर सकेंगे। अभी मैं अपनी टेक्निक जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पुल आउट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं छुपाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कम करने के लिए कर रहा हूँ। ये जो है सोमैटिकली बॉडी लेवल पे इट लैंड्स वेरी डिफरेंटली इन द बॉडी। वन मेंटेन्स थ्रेट परसेप्शन, वन रिड्यूसेस थ्रेट परसेप्शन। एक जो है खतरा जो है जारी रखता है, दूसरे लिहाज से खतरा कम है। जब खतरा कम है, जब हमारी बॉडी में खतरा की फीलिंग जो है कम हो जाएगी, तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होगा। क्योंकि ये टेक्निक यूज करने के लिए कॉग्निटिवली माइंडफुलनेस रहना जो है, माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। और माइंडफुलनेस इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू परसीविंग थ्रेट, दे आर द ऑपोजिट। So that is why when when we say कि वॉलंटरी से स्टैमरिंग कीजिए, किसी को लोगों को बताए, लोगों को बताएं, अच्छा तो ये ठीक है। सब कुछ जो है दिस इज टू रिड्यूस थ्रेट परसेप्शन। बिकॉज when you reduce threat perception, not only do you feel better, you are also able to be more experimental with speech. Because the way to get on the other side of less struggle, to feel less struggle, is to play with your speech. खेलना है, अपनी स्पीच के साथ थोड़ा सा खेलना है। और खेलना जो है ज्यादा आसान होगा, ज्यादा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी जो अगर हम छुपा नहीं रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित। एंड मैं उसमें बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ धीरज के लिए। धीरज, आपने सुना होगा कि बहुत बार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन जो है वो बयान देते हैं, और उसके लिए कई बार कुछ लोग कहते हैं कि फलानी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है बताते कम हैं, छिपाते ज़्यादा हैं। और किसी के लिए कहते हैं कि उसने जो बात थी बता दी। तो यही बात है टेक्निक के साथ भी कि कई कई बार हम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं हकलाने को छिपाने के लिए, और कई बार हम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं मुश्किल से बाहर निकलने के लिए। तो जब हमारा दिल में हमारा जो मंशा है छिपाने की, तो वो एक तरह का एडेड बर्डन बन जाता है, और उसकी वजह से टेक्निक यूज करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि आपके मन में अगर थोड़ा सा भी डर है तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि माचिस की तीली अगर गीली है तो कितना भी माचिस की तीली रगड़ो आग नहीं जलेगी। तो थोड़ा दिल में डर नहीं होना चाहिए कि मैं हकला रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मगर हकलाऊंगा तो भी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। तो अभी मैंने ये रूम में शेयर में बांट दिया है आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड एंड योर लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। सो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा स्क्रीन पे जो भी आता है। एंड डॉक्टर अमित और मैं थोड़ी देर यहाँ पे गपशप करेंगे, फिर हम लोग भी ज्वाइन करेंगे रूम नंबर 1। तो एक बार और इनको बता दीजिए प्रॉम्प्ट क्या है। हाँ, प्रॉम्प्ट है आप लोग को अपने सेकेंडरीज और अवॉइडेंस के बारे में बात करना है, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करना है। थोड़ा ऐसे भी कहना है कि मैं ये मेरा अवॉइडेंस बिहेवियर है और ये मेरा सेकेंडरी बिहेवियर है। थोड़ा सोचना कि ये अवॉइडेंस बिहेवियर या सेकेंडरी बिहेवियर, क्योंकि कई बार वो बड़े मिलते जुलते से लगते हैं। तो उसके बारे में सोचिएगा, आपस में बात करिएगा, एग्जाम्पल शेयर करिएगा। ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं है, मैक्सिमम 2 या 3 लोग हैं, तो सबको बोलने का मौका खूब सारा मिलेगा। क्योंकि खूब सारी बातचीत करिए, फिर वापस से आप लोग आएंगे तो हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, और आप भी सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर अमित, इज दैट ओके? डू यू वांट टू ऐड श्योर समथिंग? श्योर श्योर श्योर, या दैट साउंड्स गुड। या ठीक है, सो आई एम ओपनिंग ऑल द रूम्स। डॉक्टर अमित, डोंट ज्वाइन द रूम नंबर 1। या हेलो। आई सो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हेलो। गोकुल राम, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा लिंक, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मैं आपको अभी फिर से दोबारा भेज देता हूँ ज्वाइनिंग करने का लिंक, ठीक है? तो आप रूम नंबर 3 में चले जाओ, गोकुल राम। और आप लोग जब बात नहीं कर रहे तो अपना माइक्रोफोन हमेशा म्यूट कर लिया करिए, क्योंकि अनावश्यक वो डिस्टरबेंस हो जाती है आवाज में। ओके। तो
So I and you will go to room number 1 because Okay. Vidya has got some language problem, so she would like to talk to us in English. Okay. And You need to after send me English, the link for breakout one. but hold on, I'm not. Okay. I just want to make sure that everybody joins their rooms. डॉक्टर विजय, आपको लिंक मिल गया? लिंक नहीं मिला सर मुझे। नहीं मिला? अच्छा, अभी देख लेता हूँ मैं आपको हाँ, आपका रूम नंबर 3 है। मैं आपको फिर से लिंक भेजता हूँ, ठीक है? मैं आपको रूम नंबर 1 मिनट, रूम नंबर 6 में भेज देता हूँ। गुड, नंबर 6 अभी लिंक मिलेगा आपको, रूम नंबर 6 का। डॉक्टर विजय, हाँ सर। मिल गया ना? ओके ओके, सो नाउ वी कैन टॉक, डॉक्टर अमित, फॉर few minutes and then we'll join Vidya. So how's everything with you? I hope everybody is Good. very happy because Trump has I don't know about that. Can you pause the recording? Happen, so that leads to anticipatory anxiety and struggle. Then there's the consistency effect, which is we tend to struggle on the same words, same sounds, because there's a lot of classical conditioning, associative learning that has gone into it. Body just remembers that these sounds are tough. So there's a consistency to the stammer on those particular words. And the third one is the adaptation effect. So the adaptation effect is seen very commonly where somebody, like we test it out in speech therapy quite often, we test it out in a reading situation. So you give somebody a passage to read from the beginning till the end. The aggregate data indicates that typically when you split that reading passage into one third, one third, and one third, when you count the percentage of syllables that have been stammered in the first one third, they go down in the second one third, and they go down in the third one third. So as the person starts reading more and more and more, they get more and more used to the task. So some of the familiarity then helps with the more forward movement and so on. So that is also a product of motor rehearsal. When we stammer on a word, and then we say the word again, like right away when we redo that word, we tend to be more fluent next time around. That is also a manifestation of the motor rehearsal effect. Some people, whether they are conscious of it or not, you are becoming more conscious of it. When they stammer on a particular word, they'll repeat the word silently. They'll mouth the word silently. This is another way of sort of rehearsing motorically that gaining from it in a way. It's like if I could do it differently, body thinks if I could do it differently, this is kind of like how I would sort of. Yeah. But this motor rehearsal on like a repetition of a stammered word has the opposite effect as if somebody else asks us to repeat, right? Yeah. So like if you stammer on a particular word, now you didn't hear what I said, you weren't sure, you asked me to repeat, now I'm under time pressure. Mm. When I do it on my own, word, that's a cancellation. Cancellation rides on motor rehearsal. It's a redo, right? You're leveraging the body's innate tendency to rehearse and to be less struggled next time. And you're also changing the wiring of the system in a cancellation. You're changing the wiring in the system because what you're doing is you're experiencing the same moment with less struggle. You're experiencing the same moment with less time pressure. You're experiencing the same moment with more approach behavior, not avoidance behavior. So you're desensitized at the same time. So cancellation is a fantastic example of how we leverage motor rehearsal in changing the stammering experience. Right. You're on mute, Achyut. So we can say that what Vidya is doing is just like a cancellation technique and not necessarily bad.
or harmful? No, it's nothing bad or good. It's something that you're doing this implicitly without being aware. And now that you're aware, you're asking for why that is. I would even say to you that um, like if you're already doing it silently, create a situation for yourself where you practice on cancellations. You know, Okay. you might even voluntarily voluntarily stammer. I just did a cancellation. I stammered on the word voluntarily. I stopped. I took a pause. I thought about where I stammered, how I stammered. I decided to do it differently. I voluntarily stammered again, but with less physical tension on that word. So the more cancellations you do, the more redos you do of your stammer overtly, verbally, in a social situation, the more confident you're likely to feel is sort of the point. So if you're already mouthing the word silently, mouth it overtly. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Mhm. Yeah, it's called cancellation technique. I didn't know that. Yeah. Yeah. And the cancellation technique in particular is one of the most powerful ones that you can use because in a cancellation, you're literally rewiring the brain and rewiring your social experience in a very different way. Um, yeah, because who wants to go back to a stammer? Nobody wants to go back to a stammer. The tendency is to move forward. Like you've had a moment of stammering. Not only do you want to preserve the continuity of the rest of what you're going to say because you're focused on meaning, making meaning. Who wants to go back to figure out the movement? But if you go back to figure out the movement, what you did, then you equip yourself to like deal with the stammering moment with less struggle next time. And if the more cancellations that you do, the more you're moving in that direction. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. So, Vidya, what avoidance behavior are you working on currently? Are you working? Currently, Are you working on uh, something? I am um I'm actually not currently working on avoidance behavior, but I Mhm. have one more question now that I got reminded of. Sometimes when people ask a question, uh, I will not be answering, but somebody else is answering. When I interrupt them, then I will not stammer. But if I am put on, like uh, butting in between and then talking, that I will not stammer. I that also I wanted to know, like weird thing. Yeah. So a lot of this stuff is also very unique. I mean, some people may find they stammer more in that situation. Some people may find that they stammer less. So again, going back to you used his name, Joseph Sheehan. Mhm. He talked about the difference between an approach drive and an avoidance drive. And there are these, again, approach avoidance conflict. These are oppositional forces. And so why is it that a lot of us don't stammer when we're angry, right? Mm-hmm. That also happens. Usually people, that happens to people. If they're fearful, they're angry, they'll stammer a lot. A lot of us actually will not stammer in that situation when we're Yeah, angry. yeah. So he talked about the fact that there are these oppositional drives. When the approach drive is stronger than the avoidance drive, Okay. then typically you see a certain behavior pattern. You don't see a lot of stammering in that situation. When the avoidance drive is greater than the approach drive, then you're getting into more concealment, you're getting into more threat perception, your muscle tension is ramping up, and therefore then you find it very difficult to talk. So yeah, that also explains how something that could affect the same situation that could affect one person affects the other person in a very different kind of way. There's this balance between the approach drive and the avoidance drive. That's one frame that you can use to understand why there is individual variation, because some people may have a stronger approach drive in one situation, greater avoidance drive in another situation. The other person may be wired in a different way. So there's a lot of individual variation in all this, and that Yeah, yeah, intersects with all these things. Is it safe to say that we may have all these
these theories and hypotheses to understand. But still, there is a certain amount of randomness about this whole phenomena, that Yeah, sometimes there's a lot of randomness. Yeah. the impulse passes through, sometimes it doesn't pass. I remember Bilkul, at bilkul. one. Yeah, this is absolutely 100% correct. This is one of the things I think this is very important to understand. This randomness in the experience. Not everything can be explained, but the randomness part is very important. And one way to understand this randomness Uh, is that the circuitry for speech and the circuitry for emotion uh, is they linked cross. up with the head. It's all part of the person, right? Everything that you speak goes through the emotional circuitry. Yes. We're crying, that comes out in the speech. When we're laughing, it comes out in the speech. I mean, intersects with emotions. That's why I think this speaks to another point about why is it that techniques don't work all the time. Well, body is different, right? Body is different from situation to situation to situation, emotionally different from situation to situation. So to think that you'll be able to manage every moment of stammering with a technique is nonsense, because there's going to be some randomness just because you're just emotionally feeling different. Yeah. Many years ago, I was able to, cultivate enough confidence to conduct workshops. So I'll go to the front and conduct a workshop, and I will not stammer much. But during the coffee break, when I would have interaction with one-to-one with Yeah. same participants, one-to-one, I'll have lot of difficulty. And then I will say, what is this problem? I was talking to these 20 participants in the session, and I was able to talk. And now when I'm meeting them one-to-one near coffee machine, I'm having so much difficulty. So, Yeah. so it's very difficult. So I think, as you said, when we will be comfortable with person A or person B is very difficult to predict. It's very We difficult to never predict. Very difficult to Yeah. predict. I Yeah. may become And very in a comfortable bad with A mood. now, in a bad mood, yes. Yeah, I mean, a day, everything keeps changing, right? Sometimes you're in a nice mood, sometimes you're in a bad mood. So it's like when we talk about stammering being environmentally cued behavior, we're Mm, talking about both the external environment, what Dr. mm, Sachin is describing, that mm, in one situation, same people, mm, listening to him talk, give a presentation, he's mm, much more fluent, he's much more in charge, his approach mm, drive is higher, and he's able to feel more in control. But on a different situation, like the same people are on the water cooler or whatever, he's like struggling. So it's environmentally cued behavior, but it's also the internal environment, right? yeah. So there are times when we feel, emotionally dysregulated. We're sad, Yes. we're Yes. depressed, we're all these things. We haven't had enough sleep. All of these internal environmental states are going to impact stammering just as much. So it's, Mm, when you talk about environmentally cued behavior, it's both the external environment and the internal environment. This goes to what he's saying in terms of randomness. There's a whole lot of randomness. You can figure out all you want, and there will be lots of mm, patterns, I think, that are worth figuring out. Knowing your stammering experience is very, very important. But I mhm, think also understanding that sometimes it's just the body doing what it's doing. Yeah. yeah. Shall we call We- people back from the breakouts? yeah, we can do that. And as I'm doing that, Vidya, how is your interview going on with Rusha Yeah, it Chaudhary went. and Nidhi? I mean, Drusha Chaudhary, yesterday I did. It Okay. was really well. Oh God, she has so much knowledge when it comes to gender aspects of Mhm. stammering. It Yeah. was really a good interview. I- Yeah, it i- was a i- good experience. Yeah. Is she working in Bangalore currently? Is she working in Bangalore? Teach India No, fellow? I mean, I Mm. don't know in which place she works. I forgot. Okay. I mean, my memory is not that good. Yeah, but she still works as an teaching fellow. Yeah. Okay. But you had a good experience of interviewing her. Yes, yes, yes. And I'm sure she also must have enjoyed.
Yes. uh, being on the chat Oh, show. I think your chat show is becoming very popular now. thank you. Thank you. I think I think soon TISA can start charging a little fee. Okay, so everybody is back here. So nice to see everyone back here. And so let us start talking about secondary and secondaries and avoidance. So I just want a very quick, short answer from Nyai. What do you think is the difference between secondaries and avoidance? A very simple, working definition. Over to Nyai. Nyai, can you hear me? Okay, so while you are getting ready, let me ask the same question to Yogeshwari. Yogeshwari? हाँ Acha, okay, Nyai is okay. Go on, Nyai. Go on. What is the difference between secondaries and avoidance? so sir, can you please elaborate your question? Like, Okay. The main difference between secondary behaviors and avoidance behavior. in secondary behavior, mm, so I think that both of them are similar in some ways. Like in secondary, gosh. It's okay, no problem. You were in the same group as Yogeshwari and and one more women participant. So did you all discuss this in your group? Did Yogeshwari help you with this? Just see, explain to me what is secondary behavior. But we did not talk about the uh, mm, You can try some bouncing or prolongation like avoidance or avoidance. Try these techniques. yes, sir. So usually, and I talked about how we have used secondary behavior in our day-to-day day-to-day life. Yeah, Yes, that's it. thank you so much, Nyai. Thank you so much. Very good. After you can also, I mean, after the session, you can of course have one-to-one chat with Yogeshwari or Divyanshi and understand these thoughts, these ideas. Okay, good. So Yogeshwari, what do you think is the difference between avoidance behavior and secondary behaviors? सर जो अवॉइडेंस होता है इसे हम जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो चेंज करते हैं कि हमें पता होता है कि ये हम वर्ड पे स्टैमर करने वाले हैं तो हम वर्ड की बजाय शब्द 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 का यूज करेंगे कि वो ज्यादा आसानी से आ जाए और जो सेकेंडरी होता है कि ये होता है कि हम बोलने से पहले ही ये मान के चलते हैं कि हम अभी स्टैमर करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारी आंखें ब्लिंक हो जाएंगी या फिर हमारी जो गर्दन है वो अ, ऊपर होंगे हमारे लिप्स से वो फ्रीज हो जाएंगे इससे हो सकता है मेरे हिसाब से जो सेकेंडरी और अवॉइडेंस के बीच में ठीक है, ग्रुप में देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने वीडियो शेयर किया है शुभम कुमावत का। उन्होंने 2 वीडियो बनाए, 2.2a 2.2b। 2.2a सेकेंडरी के बारे में है, 2.2b अवॉइडेंस के बारे में। उसको देखिएगा तो आपको बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे। तो मैं मनीष से जानना चाहता हूँ। मनीष,
क्या फर्क है सेकेंडरी बिहेवियर और अवॉइडेंस बिहेवियर में? अवॉइडेंस बिहेवियर हम बोलने से पहले हम्म अपने मन में सोच लेते हैं, हम्म बोलने से पहले, हम्म कि ये शॉर्टकट रहेगा, ये बेटर रहेगा, या इस तरीके से मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। और ये हम जानबूझकर करते हैं, अवेयरनेस बिहेवियर। और जो सेकेंडरी बिहेवियर है, ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब हमारी जो पिछली बैड हैबिट्स है हम्म, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिक होता है। और ये सेकेंडरी बिहेवियर जब हम ब्लॉक में चले जाते हैं, या ये अवॉइडेंस बिहेवियर के बाद में होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है अवॉइडेंस के ठीक है बाद बोलते ठीक है। समय। थैंक यू मनीष, थैंक यू मनीष। अभी आज जवाब को हम और एनरिच कर सकते हैं, तो मैं डॉक्टर विजय को बोलता हूँ। डॉक्टर विजय, कैन यू ऐड समथिंग टू दिस आंसर? थोड़ा और समझा के बताएंगे सेकेंडरी में और एविडेंस में क्या फर्क है, डॉक्टर विजय? सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा ठीक है, पे ठीक, कोई हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं शुभम को बोलता हूँ, शुभम, शुभम कुमावत। जी सर। तो सर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो जो एवॉइडेंस बिहेवियर है वो तो अपने हुआ कि स्पीच के पहले का, कि अगर जहाँ पर जिस सिचुएशन के अंदर अपन पहले सोचते हैं कि अपन यहाँ पे स्किप करना है या फिर बोलना कम है या फिर नहीं बोलना, तो उस वाले जो सिचुएशन के अंदर अपन अवॉइड बिहेवियर मानते हैं। और इसके लिए अपन मतलब तीन या चार, या तो अपन शब्दों को स्किप करते हैं, या फिर शब्दों को अपने छुपाते हैं, या फिर शब्दों का अपन एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो ये तो हुआ अपना एवॉइडेंस बिहेवियर। अब ये कई सिचुएशन के अंदर भी कर रहता है। ये कई बार स्ट्रेंजर के साथ भी रहता है, ये कई बार अपन जो किसी स्टोर के ऊपर जाते हैं वहां भी ये चीजें होती है। और ये कई बार अपने फैमिली के साथ में भी होता है, कि फैमिली की गैदरिंग है, वहां पर बाकी के मेंबर्स है वो अपने अपने पहले की कोई बातें बता रहे हैं। अपन अपन उस टाइम भी अपन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि यार अपने को ये चीजें मतलब एटलीस्ट यहाँ से अपने को ना बोलना पड़े, और ऐसा। तो ये अवॉइडेंस बिहेवियर के अंदर आता है। और सेकेंडरी बिहेवियर है कि अपन जो एक बार बोलना अपन ने स्टार्ट किया, एंड देन अपन जैसे ही स्टैमर किया अपन ने, और अपन ब्लॉक के अंदर गए, तो उस ब्लॉक के अंदर अंदर अपने को बॉडी के अंदर क्या क्या अपने चेंजेस हुए, या तो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटली भी अपने चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे सभी जानते हैं कि आइज का ब्लिंक करना, हाथ और पैर का एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होना, ये सारे सेकेंडरी बिहेवियर्स के अंदर आते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। तो इट्स ऑलमोस्ट 8:45, तो वाइंड अप करने से पहले मैं डॉक्टर अमित को बोलूँगा कि वो बताएंगे कि हाउ टू डील विद अवॉइडेंस। टाइम कम है, लेकिन इफ यू कैन डिस्कस द आइडिया डीलिंग विद अवॉइडेंस। Well, I think we can certainly talk about dealing with the avoidance, but I think it would be very useful to figure out what's going on in avoidance behavior, what is it doing to the body. I think that conversation needs to happen first. I mean, we can say कि avoidance behavior को manage करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन क्यों, क्या क्या problem है avoidance behavior में, ये जानना बहुत important चीज है। What is avoidance behavior doing to the stammering experience? What is it doing to fear? What is it doing to anxiety? What is it doing to the physical tension in the speech? What are some of the advantages of avoidance behavior? Because I think we can't say avoidance behavior is bad. Avoidance behavior is safety behavior. We all engage together. The problem is safety behavior is also limiting behavior. That's the key. That's the key to understand, and to be careful about knowing about like what avoidance does to the body and why we want to change the avoidance pattern. क्या problem है avoidance में? So I can certainly talk about managing avoidance behavior. I think
There are lots of things that one can do to manage it, but I think having this conversation with the group would be very important at the beginning. So maybe we should have this conversation next week, maybe on a Saturday. Yeah, Maybe have a yeah, we can do conversation. that. Yes, we Maybe can do that. part 2 of this Yes. conversation, maybe on Saturday, and maybe do some breakouts again. Mhm. Think in terms of, what is protective about avoidance behavior and what is problematic. Right. Recognizing that there is a safety component, recognizing there is also a limiting component, and having a good conversation about this and sharing it back, because then we can summarize a lot of thoughts around it. So can we just do that over Saturday, maybe this Yeah, Saturday? yeah. Sure, we can do that. Yes, definitely. So we will wind up, and before winding up, I just want to give a little homework to everyone. अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस बिहेवियर। तो जैसे आपका एडमिशन किसी प्रोफेशनल कॉलेज में हो गया है और आपको मालूम है कि पहले सेशन में इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और आप इसी डर से आप नहीं जाते हैं क्लास पे। ये मैंने किया था एक बार बहुत साल पहले। तो अगर आप फर्स्ट सेशन मिस करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वहाँ पे खड़े होकर अपना नाम बताना पड़ेगा और इसमें बड़ी मुश्किलें होंगी, तो आप एक हफ्ते तक क्लास नहीं जाते। आपको मालूम है पढ़ाई अभी कुछ नहीं हो रही, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हो रहा है रोज, तो आप क्लास मिस कर देते हैं। तो इस अवॉइडेंस बिहेवियर के प्रोज एंड कॉन्स आपको लिखकर या बोल के एज ए ऑडियो शेयर करने हैं कि मिसिंग द क्लास आफ्टर ज्वाइनिंग ए प्रोफेशनल कॉलेज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। इसमें फायदे क्या हैं? फायदे भी जरूर कुछ ना कुछ होंगे और नुकसान भी कुछ ना कुछ होंगे, तो उसी को डिस्कस करते हुए एक ऑडियो या वीडियो या टेक्स्ट में आप शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स द ओनली होम टास्क, होमवर्क फॉर यू। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। वी हैड ए गुड टाइम, गुड डिस्कशन, बहुत मजा आया आप सबके साथ बात करके। और अपनी वीडियोस बनाते रहिए,